I borrowed it at 36% interest per annum. I wanted to buy a 3 BHK villa with a pool and a proper comfortable SUV and a hatchback and a scooter to commute in city. Okay. And for long rides, I need a BMW GS 1200. At this point, I had perfumes worth of 80,000 rupees. You spent more than a month of your salary back then for a basic setup. So I gave him 1 lakh rupee. एक साल के बाद खत्म टाटा. Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. Today I've got Lokesh. He's a marketing manager in a startup. He's 29-year-old. He's a fitness enthusiast. And आज हम इनसे इनके finances के बारे में बात करेंगे. Special thanks to Jobsurance for sponsoring this video. More about them later. Hello Lokesh, how are you doing? Fantastic, thank you. What do you do, brother? So I work in this startup called as a marketing manager. As of 2023, what is your total compensation? So I'm withdrawing 10.5 with a variable component of 50. So take home would be around 75 after all tax deductions. After all tax deductions. I also hold ESOPs in this company. Okay. Which is 100% vested. Okay. Yeah. Okay. You also said that you freelance, right? Can you talk about it? I had like really good interest towards fitness. I did my certification in fitness training. I'm a CPD certified fitness trainer. So you're like a fitness coach? Yeah, fitness coach. So वही था, recurring clients नहीं था. That is one freelance I used to do. And obviously digital marketing में अगर कोई friends है, कोई मतलब reference आ रहा है, I'll help them setting up their ad accounts, social media campaigns and all. तो that's not recurring. तो वो कभी कभी कर लेता हूँ, opportunity आया. What I have realized in your case is that after 7.5 years of experience, 10 LPA is not a package which is on the higher side. Right. So, firstly, why is that the case? Why is your income 10 LPA after 7 years? And what are the necessary steps that you can take to grow your income? So what personally I believe is, obviously I've been in this company continuously like 5.6 years. I didn't jump. Only reason is I'm able to find right balance for both personal life, work life, learnings, because you work directly with management, you get to learn a lot of things about the industry. So वो learnings बहुत ज़्यादा हो रहा है, and that's why and obviously for the loyalty they rewarded me with ESOPs also. But yes, probably अगर मुझे switch करने का thoughts आया नहीं, but eventually I think I'm planning, मतलब. Currently क्या आपके पास एक emergency fund है? पहले नहीं था. But now I have 50,000 rupees जो मैंने रखा हूँ savings account में. And I also have a 10,000 rupees cash मैं हमेशा रखता हूँ क्योंकि कभी भी cash का ज़रूरत पड़ सकता है. बहुत सही. So that's the emergency fund I have. In today's economic environment, no job is safe, no business is safe. There are news about layoffs everywhere. ऐसे situation में एक अच्छा emergency fund होने की ज़रूरत है. Emergency fund के दो सबसे बड़ी utilities है, health emergencies and job emergencies in case you get laid off, right? Thankfully, Jobsurance has come up with India's first income protection plan, which will pay you an emergency fund worth 3 months of your salary if you ever lose your job, so that you have a safety net to fall back upon. क्योंकि job हो या ना हो, EMI, rent, fixed expenses, ये तो रहेगी. That's why it is very important to have something like an income protection plan. With plans starting at just 999 rupees per year, I think it's a very small price to pay for anybody if you have multiple liabilities, loans or any kind of responsibilities. In developed countries like UK, this kind of plan is offered by the government and top insurance companies, but India में अब तक ये नहीं था. But thankfully, after Jobsurance, income protection plan has also come to India. यही नहीं, Jobsurance also offers a placement support if you are looking for jobs after you get laid off. This income protection plan is backed by a top insurer. So if you use my code and buy Jobsurance using the link in description, you will get an Amazon voucher worth up to 500 rupees. जब तक हम Jobsurance की बात कर रहे थे, हमने आपके लिए भी एक income protection plan खरीद लिया है. I hope ये कभी भी यूज ना करना पड़े, but it is always better to be safe than sorry. ठीक है, so this is so we have discussed your income. Now let's go to your expenses. Okay, firstly this house, right? Are you from Bangalore? Settled in Bangalore for last 11 years. My parents are from Andhra Pradesh, Tirupati. Got it. Okay. So this house, have you purchased it? Is it a rental situation? What is it? It's a rented one. I'm paying 13.5 for this.
Next is food, right? I can see that you have a ribbed body, right? And ribbed body comes with a lot of protein intake, Yes. and protein is not necessarily cheap. So how much do you spend on food? Do you cook your food by yourself? Yes, I have a maid, but she helps me in chopping, cleaning utensils, वो सब में. But I cook my own food. मेरा सिर्फ चिकन का और प्रोटीन का ही ऑलमोस्ट महीने में 5-6 thousand हो जाता है. एंड उसके अलावा ग्रोसरीज इज सेपरेट. ठीक है. Groceries plus protein. How much do you spend on? अराउंड 9,000. Next is how often do you eat outside? डेली बेसिस में तो नहीं, बट वीकेंड्स में लाइक फ्राइडे नाइट या सैटरडे आई ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो स्विगी का ही मंथली अराउंड 4,000 तक आता है, बिकॉज बाई नाउ पे लेटर वाला है, तो उसमें 4,000-5,000 तक होता है मंथली. एंड देन वीकेंड्स ऑब्वियसली आई गो आउट. मैं सिर्फ सोने के लिए घर में रहता हूँ सैटरडे संडे. अच्छा. So what are your weekend expenses? Weekend expenses same, like 5,000 to 6,000 per month. Next is travel, right? How far is your office? 3 kilometers from here. I have a scooter. Okay. So uska fuel charge is like 1,000 rupees or 1,500 per month. And did you buy the scooter paying the full amount? Full cash. So what are some utility expenses apart from this? मेरा एक बेड है that is rented. उसका around like 1,000 rupees जाता है per month. उसके अलावा कुछ फिक्स नहीं. What about maid? 2,500. So आपके जो सारे बेसिक एक्सपेंसेस है वो सब मिला के कुछ 30-35,000 रुपीज आता है. Right. Which is almost 50% of your take home salary. One thing you said while you were discussing the Zomato delivery expenses that you use buy now pay later app. Right. Please explain. I use Zomato, Swiggy. I do the payment through buy now pay later apps. Obviously वो convenient है, क्योंकि हम लोग देखते भी नहीं है कि कितना कट रहा है, कितना ऐड होता है, क्योंकि समटाइम्स अगर पेमेंट गेटवे से अगर नहीं हो रहा है तो फिर इट्स ईजी, 1-2 सेकंड में पेमेंट हो जाएगा. एवरी 15 days का साइकिल होता है उनका पेमेंट करने का. वो जो दिखाएगा उसमें कर देता है. अब वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वो वी डोंट सी. The apps that you are using for Zomato, Swiggy, I don't think they charge anything extra. ठीक है, but like you said, right, it is so convenient that you end up spending extra. Right. You overspend, right, because you are like कि अच्छा 15 दिन बाद पैसे देना है, तब तक तो there will be some way that I'll be able to pay back. Does this happen with you? I know it happens. So for example, there are months where my bill goes more than 10,000 rupees, क्योंकि कभी हाउस पार्टी हो गया, दोस्त लोग आते हैं, तो ऐसा होता है कि 15th मेरा ड्यू डेट है, बट दे विल गिव यू 5 days बफर 20 तक. अगर इनकेस ये नहीं हुआ फिर पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड. अच्छा, पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड एज इन? उनका जो ड्यू है आई पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड. I am really curious. Okay, how regularly do you use a credit card? So I have 2 credit cards. One has a limit of around 1.1. The other one has 1.3. जब मैं घर सेटअप किया था, all the furniture, sofa, TV, fridge, washing machine, I bought it from one credit card. उसका around like 50-60,000 हुआ था. I'm still paying it. How long has it been? I think almost an year. वो वाला अभी EMI पे कर रहा हूँ. आपने क्यों इतना लंबा EMI रखा है? Because I've purchased lot of things in bulk and 1.5 year पहले मेरा सैलरी भी इतना नहीं था. कितना था? It was around 6.5. तो around 50,000, 48,000 in hand. तो मुझे लगा probably 1.5 year में सैलरी भी बढ़ जाएगा, तो I'll keep it in long. तो सोफा की ज़रूरत थी तब? हाउस पार्टी वगैरह होता है, फ्रेंड्स लोग आते हैं, माई पेरेंट्स ऑल्सो कम्स, राइट, सो एक कंफर्टेबल होना चाहिए था बैठने के लिए. Would your parents, you know, be angry if you asked them to sit on a beanbag? Not really, but हम भी चाहते हैं कि बेस्ट दे. वो लोग आके नीचे बैठ रहा है, doesn't look good. तो वो आपके बेड में रह जाते हैं, आप बीन बैग में रह लेते फुल टाइम. नहीं. The reason why I'm asking is you spent more than a month of your salary back then for a basic setup. What all did you buy? I bought a washing machine, fridge, Okay. and a microwave, TV, and sofa. ठीक है, चलो. Sofa is still understood, yeah, that you know friends come over, parents come over, and they also need a place to sit, so it makes sense. What about the TV? You have a smartphone, right? Right. So most of the things you can consume on in the smartphone. Why do you have to take debt and buy a television? तो मुझे कि मतलब अगर if I'm working in home, मुझे कुछ मूवी लगा लेता हूँ, देखता रहता हूँ, and that's how I work. Probably as you said, इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हार्डली आई वर्क फ्रॉम होम. कभी वीकेंड्स में
बैठ के देख लेता हूँ, उसके अलावा What are some other loans that you have taken up? हाँ, सो दैट इज़ वन क्रेडिट कार्ड. द अदर क्रेडिट कार्ड आई हैव अ लिमिट ऑफ 1.3. उससे मैंने एक नया फ़ोन लिया था लाइक 3 months ago, विच वॉज अराउंड 90,000 रुपीज़. क्यों 90,000 का फ़ोन क्यों लिया आपने? मेरा एक वो इम्पल्सिव बाइंग है ना, वो वाला है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे फ़ोन्स एंड शूज़, परफ्यूम्स. तो इसमें मेरा काफ़ी मतलब देखता रहता हूँ नया फ़ोन्स कौन सा आया, अनबॉक्सिंग वीडियोस. सो आई बॉट दिस न्यू फ़ोन. कैसे खरीदा था? क्रेडिट कार्ड क्रेडिट से? कार्ड. और कितने मंथ का EMI? नो कॉस्ट EMI? 24. और क्या क्या आपने, और बताइए आपके. ये दोनों क्रेडिट कार्ड का EMIs है. सो 2 big blunders which I've did. So what happened is in 21 till 21 तक, मतलब second lockdown तक, I had like 3.5 to 4 lakhs of savings. Wow. And that's when you were earning 5.5 lakhs. Right? So, yeah, in 2016 I started with like 13,000 rupees as my salary. तो तब से थोड़ा सा मैंने सेविंग्स करना शुरू किया, बट कोई उस टाइम इतना दिमाग नहीं था स्टॉक्स में डालना है, म्यूचुअल फंड एंड ऑल. सिर्फ मैं सेव करता था, बैंक में ही रहता था. एंड आई यूज्ड टू डू चिट फंड्स, स्पेशली आंध्रा में ये काफ़ी वेरी पॉपुलर. चिट्स डालना शुरू किया तो सेविंग्स हुआ. ये वाला गाड़ी ले लिया पूरा कैश में. एंड देन व्हाट हैपेंड इज, अनफॉर्चुनेटली यू गेट टू मीट सम पीपल इन योर लाइफ. वो लोग बोलते यार तुम मेरे को इतना पैसे दे दो, मैं तेरे को 6 months में इसको डबल करके दे दूंगा. अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें भी कुछ चीटिंग हो सकता है, क्योंकि यू नो दिस पर्सन, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है. सो आई गेव हिम 1 lakh रुपी एंड आफ्टर 6 months आई कॉल्ड हिम, मेरे को ये पैसा चाहिए. तो ही वाज लाइक नो, आई एम इन अ बैड फेज, अभी थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, ये वो करके. 6 months और 6 months हो गया, 1 साल के बाद ख़त्म, टाटा. आई थिंक दैट्स फ्रॉम देन माई फिनेंशियस थोड़ा सा बैड होना शुरू हुआ. उसके बाद मतलब माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि यार मतलब इतना मेहनत करके सेव किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्जेस को तुमने कंट्रोल किया. आई थिंक दैट्स व्हेन दिस इम्पल्सिव बाइंग थिंग हैपेंड. यार इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी व्हाई इज़ दिस हैपनिंग विथ मी. तो नहीं, अभी मतलब किसी को रुकना नहीं है, अभी एंजॉय करना है तो एंजॉय करेंगे, खरीदना है तो खरीद लेंगे. तो मैंने दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड. Is that also the reason why you have not been able to take more risks professionally, like job वॉब switch नहीं कर पाए आप? काइंड ऑफ yes, and obviously at this current scenario किसी का जॉब गारंटी नहीं है. Of course. कोई बड़ा कंपनी में भी जा रहा हूँ, अगर जॉब सिक्योरिटी है कोई नहीं बोल सकता है, तो वो भी एक है. ऑब्वियसली ये लायबिलिटीज़ पहले क्लियर कर देंगे, देन यू विल गेट नहीं अभी कर सकता हूँ, थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ. आज के दिन सही में कोई जॉब, कोई भी बिजनेस सेफ नहीं है. लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देयर आर न्यूज़ अबाउट layoffs left, right and center. In such a situation, you need savings, right? Do you have an emergency fund in today's date? So I was talking about the debts and all, right? तो पहले था ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था एक पॉइंट में. सडनली एक मेडिकल इमरजेंसी आया, उसके वजह से मैं बिना कुछ देके कुछ फिनटेक ऐप से मैंने लोन ले लिया था. द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई. मुझे पता था कि ये गलत है, बट आई डिडंट हैड एनी ऑप्शन. आई डोंट बिलीव इन टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, क्योंकि उनका सिचुएशंस क्या होता है. तो इसीलिए मैंने आई बोरोड इट एट 36% इंटरेस्ट पर एनम. कुछ नहीं. What was the medical emergency and what was the amount? 1.2 lakhs. It was from 2 apps. For one app it's 26%, the other app was 36%, and it was just 75,000 rupees, 36 months. After solving everything, मैं बैठ के देखा था यार मैंने कितना पैसा लिया, एंड मुझे पता चला यार कितना बड़ा ब्लंडर किया मैंने. For 75,000 I borrowed. I'm paying 1,25,000. Now tell me one thing, how much do you spend on a monthly basis on these personal loans and credit card debt and this BNPL apps? Around 35,000. Yes. So which means that आपके जो essential fixed expenses है, उसके बाद जो भी बचता है वो पूरा का पूरा चला जाता है. Almost. What do you think is the problem? One is obviously the impulsive buying. Have you tried out anything to, control this? For last 6 months, I didn't purchase a single perfume. In fact, last year at this point I had perfumes worth of 80,000 rupees, and then अभी आप hardly like 15-20,000 का perfumes है. आप प्लीज़ ओनली 15-20,000 मत बोलो, ठीक है. इन योर केस, कंसिडरिंग अ सैलरी ऑफ 75,000 रुपीज़,
A 20,000 rupee perfume portfolio means that you have worked for more than 7 days to earn those perfumes. Right. Are they actually worth? Not really, इसीलिए मैंने परचेस करना बंद कर दिया. All this. ठीक है. So that's one great thing. Any other steps that you have taken? Same, I haven't purchased a single pair of shoe in last 6 months. What happened in the last 6 months? I've realized कि इस साल I'm turning 30 and कहीं ना कहीं what I've realized, the people at my age, they're actually doing really good financial planning. कोई घर खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है, टैलेंट दिमाग है, but the only thing is financial discipline. ये नहीं है. I've realized it. So that is when I was like, नहीं, जो मेरे पास है, unnecessary buying जो भी इसको कट करना है, and no debt वाला mindset में मुझे जाना है. Perfect. You have already taken the first step, right? ठीक है. And कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा आया मेरे पास, let's say appraisal हुआ, उसमें जितना arrears आया, उसको मैंने फट से लोन में एक्स्ट्रा पे कर दिया. तो वो वाला स्टेप मैं ले चुका हूँ. हाँ, तो लास्ट 2 months में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑल्सो. मैंने अभी जस्ट 2 months में एक 20,000 का पोर्टफोलियो बना लिया. Very nice. एंड सो माई बेस्ट फ्रेंड साइली करके है. सो शी सेड सो आई लाइक बाइंग गोल्ड. हर बर्थडे आई गिफ्ट माई सेल्फ वन. अभी जैसे रिंग खरीदा लास्ट 3 months एंड देन आई बॉट ए चैन. तो उसने बोला तुम इतना करते हो, तो एक बार गलती है किया, 10,000 में क्रेडिट कार्ड से कर दिया था, जो शॉर्टेज पड़ रहा था, एंड उसको कन्वर्ट किया 3 महीने EMI में. तो उसने बोला तुम गोल्ड खरीदते हो तो वाई डोंट यू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड स्कीम. तो वैसा मैं लास्ट 11 months से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, like 5,000 rupees per month. Very nice. You have already taken a few steps. Yes. To make sure that you don't repeat the same mistakes. But I can still feel that you suffer from the problem of impulse purchases. So for you and anybody who suffers from the problem of impulse spending, I have created a framework. The framework's name is STOP. STOP. S stands for self-assess. Firstly, you have to do an emotional check on yourself. Whenever you are thinking of buying a product, is it because you are bored, anxious, depressed, or are you feeling something emotionally because of which you want to buy it? Because a lot of times people tend to spend money because of an emotional void. Guilty pleasure, right? That is the first part of your self-assessment. The second part of the self-assessment journey is to ask yourself if the product that you are planning to buy, is it a need or a want? Because a lot of times to convince yourself to purchase something, we end up confusing an iPad or a PlayStation as a need, but that's not the case, right? So these are the 2 parts of self-assessment. Next is T. T stands for timeout. Whenever you are planning to buy something, wait for at least a week. After a week, most of the things that you plan to buy, a lot of them will lose that appeal in your head, right? So you have to wait for a week. O is you have to create obstructions, right? So in your case, the reason why you were spending so much is also because the ease of using those apps. So you have to delink your BNPL apps from your food delivery wo, theek hai? You have to delete shopping apps, and also you have to stop watching videos which force you to buy gadgets. And the last is P. P stands for planning. In your case, you said that you do not track your expenses. You need to be ahead of your finances. You have to plan a monthly budget. 6 months back, when you were constantly purchasing things, finances took the better of you, right? But if you have a proper plan in place, you will be in control of your finances. So this STOP framework is something that you need to follow if you want to curb your impulse purchase needs. I want to check with you, like for example, this 36% loan, unka outstanding balance is around 68,000 to 70,000 rupees, and I never had this emergency fund ऐसा, but उसके बाद मैं realize किया, that's why I always keep 50,000 rupees emergency medical के लिए, and also 10,000 rupees in cash. Very nice. कैश का कभी भी ज़रूरत हो सकता है. So do you advise emergency fund को यूज़ करके उसको close कर दो? You said 1.7 lakh rupees, right? हाँ. 36% or 26%. Is there an option to close these loans earlier? Like वो app allow करता है? Yes. और कितना है foreclosure charge? I'm not sure. आप वो prepayment penalty देख लीजिएगा. अगर prepayment penalty ज़्यादा नहीं है, then I would suggest you to consolidate these debts of yours by taking a personal loan at 13-14%.
ओके तो अगर आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हो 13-14% में, और आप अभी के अभी अपने दोनों वो पर्सनल लोन्स खत्म कर दोगे, यू विल सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ मनी ब्रो. राइट. I have never advised anybody to take debt to pay off their earlier debts, but 36% is also an interest rate which I have never heard in India. It's predatory, right? And guys, that's why I keep on talking about the importance of emergency fund, right? Because जब emergency आती है, right, when there is a medical emergency and if you do not have cash, you will not care about the interest rate, you will not read the TNC. बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं है. यू नो दैट समथिंग वेरी डायर कैन हैपन इफ यू आर नॉट एबल टू अरेंज द फंड्स. दैट्स वाई प्लीज हैव एटलीस्ट 50,000, 1 lakh rupees, at least 1 month of your salary as an emergency fund. That is very very important. तो आपके क्रेडिट कार्ड डेट्स, पर्सनल लोन्स, दोनों ये सबको एक सस्ते पर्सनल लोन से आप खत्म कर सकते हो. You have to do it, but again, considering that you have a problem of impulse spending, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक में पर्सनल लोन का अमाउंट है और कुछ खरीद लो. Yeah. So first, before taking out the personal loan, before applying for the personal loan, read the details about prepaying all the other debts. In most cases, the charges also won't be as much as the difference in the interest rate. So this is our Fatafat Finance round. I'll ask you a few questions. You have to answer them rapidly. Okay? The first question is, if you had an unlimited budget, what would you gift yourself? I wanted to buy a 3 BHK villa. हाँ. तो मुझे क्लियर है कि क्या लेना है. 3 BHK villa with a pool and a proper comfortable SUV and hatchback and a scooter to commute in city. ठीक है. And for long rides, I need a BMW GS 1200. I'll tell you one more thing, because you have shared your aspirations. आगे जाके, if you're ever planning to buy a home, ठीक है, 20% down payment has to be paid upfront, and your EMI cost should not be more than 30 to 35%. First thing, and second, you said that you also want to buy a luxury car and luxury bike, ठीक है, इसमें भी you should not take a loan of more than 4 years, ठीक है, the loan EMI should not be more than 10-12%, and उसका भी जो total cost होगा 20% down payment has to be paid. Remember these things, okay? You said that you listen to my podcasts every night. ये वाली चीज़ आप सुनते रहिएगा, ठीक है, ताकि आगे जाके अगर पैसे आए भी तो 80% 70% EMI में विला ना ले लो, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल रिग्रेट? I think I bought this phone. या Honestly देखा तो मेरे को उतना नीड नहीं है. प्रॉब्लम ये था कि probably I would have got a cheaper phone with big storage. Next is, if you had to choose between a luxurious house or a luxurious vacation every year, what would you choose? I think vacations, because I feel these are experiences. And the last question is, what are the 3 steps that Lokesh from 2023 will take to grow themselves financially and professionally? I'm gonna follow your stop procedure. I'm gonna really think about कि मुझे एक्चुअली इसका ज़रूरत है नहीं, तभी मैं खरीदूँगा. अगर नीड नहीं है तो नहीं खरीदूँगा. एंड फ्रॉम नाउ नो डेट, लेना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, मुझे लोन लेना ही नहीं है. एंड मोर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आई होप आज के वीडियो से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली. आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे यू हैव चेंज्ड योर वेज एंड योर बिहेवियर इन 2023. विश यू ऑल द बेस्ट. एंड गाइज, गलतियाँ सबसे होती है, बट अवेयरनेस कि हाँ गलती हुई है और अब चेंज करने की ज़रूरत है हमारी लाइफ को, दैट इज़ द की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग. गुड बाय, एंड स्पेशल थैंक्स टू जॉब श्योरेंस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो.